Okay, guys, good evening to everyone. Okay. So today we are going to start with the function concept. Okay. So what is a function? And today we are going to start with the function concept. Okay. Function. क्या होता है function? है ना? Suppose, for example, I want to print hello. I want to print hello. Hello 10 times. I want to print hello 10 times. So we are going to write 10 times. 10 times I am going to write hello. Okay. So again I want to print hello 10 times. So again I want to write this hello 10 times. That means 20 lines of code is required for writing this. To print 20 lines, है ना, to print 20 times hello we need 20 lines of code, है ना. तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने hello print किया है इसे किसके अंदर डाल दूंगा, फंक्शन के अंदर डाल दूंगा. जिससे क्या होता है कि फंक्शन को हम लोग जब जब कॉल करेंगे इट इज गोइंग टू प्रिंट हेलो अगेन एंड अगेन, है ना. तो ये जो फंक्शन होता है दैट मीन्स इफ वी वांट टू रीयूज द कोड अगेन एंड अगेन, जब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि इफ वी वांट टू यूज द कोड अगेन एंड अगेन देन वी शुड गो फॉर दिस फंक्शन कॉन्सेप्ट, है ना. देन वी शुड गो फॉर दिस फंक्शन कॉन्सेप्ट, है ना. तो फंक्शन जो हम लोग क्रिएट करते हैं व्हेन वी क्रिएट ए फंक्शन इन पाइथन, when we create a function in Python, then we use a def keyword. We use a def keyword. We use a def keyword. Def, def keyword. And whatever function you want to define. Okay. Like for example, I want to add something. I want to add. Okay. I want to add. Okay. So I'm going to define this function. And this is a function. Function. And function is divided into three parts. This is known as function definition. This is known as function definition. That means I'm defining this function. If suppose I'm providing something, suppose I'm writing a equals 10, b equals 20, and c equals a plus b, and finally I'm going to print this c. That means this is my implementation part. What this add function is going to do, it is going to add the two numbers. It is going to add the two numbers. Okay. So this is known as the function implementation. This is known as the function implementation. This is known as function implementation. And after that, when the function is executed when we call the function. After coming out of this function, this is my starting point. Okay. So when we come out of this, then I need to call this function. So for calling this function, we need to write add. We need to write add. This is known as function calling. This is known as function calling. That means I'm calling some function. Okay. So this is how we are going to define. We are going to create the function. We are going to implementation provide. We are going to provide some implementation. After that, we are going to call that function. Okay. Let me go through one example. Let me show you one example, guys. See. This is, suppose, see, what is the use of this function? Suppose I want to print. I want to print hello. I want to print hello, right? I want to print hello. So I want to execute this hello 10 times. So just I am copying and pasting this one. Listen. Suppose 5 times. Okay. So 5 times or like 6 times. Okay. So when I execute the code, right click, run, first tab, see. How many times? 6 times I am going to get. Again, I want to execute 6 times. Again, I need to write this hello. So what I am going to do? I am going to create one function, def, and like display. The function name is display. Okay. And over here, colon. We need to provide some colon. After providing this colon, press enter. See, when I press enter, see my code is going to start from here. My code is going to start. That means I'm inside my function block. This is my function block. Whatever implementation you want to give, you have to give the implementation over here, for this function. So I want to print this hello. I want to print this hello. Control X, and I'm going to print over here. I want to print this over here. This is my implementation part. And finally, we have to come out of this block. See, we have to press backspace. Okay, so we will be out of this function. Now I need to call this display. See, display. Okay.
So one time if I am calling, then how many times hello I am going to print? See, 6 times it is going to print this hello. Again, if I am calling this function, then again 6 times it is going to print. See how many times? So, what happened? My code get reduced. Okay, so when our requirement is to execute some programs frequently, then we should go through this function concept. We have to use this function concept. And how many types of functions are there? How many types of functions? There are 2 types of functions. Okay, there are 2 types of function. What are that? There are 2 types of function. What are that? The first one is known as the first one is predefined types of function. Type of functions. Okay, so the first one is known as predefined, and second one is known as inbuilt function. Okay, first one is predefined and second one is known as inbuilt function. Predefined means Python has given us some functions. Okay, like for example, I want to add. Okay, I want to append inside the list set. We have seen add, append. That is the predefined. That means Python has given us that function. And when we are going to create our own function, this is our own function. So that is known as predefined function. Right? And so like this, there are 2 types of functions. Now, based on the parameters, suppose I am having some parameters. And this is, see, actually what are the parameters? Let me explain. Suppose I am defining def add, and I am passing some parameters. This is known as parameters. That means here how many parameters I have passed? I have passed 2 parameters. That is A and B. So this is known as parameterized function. Okay. So when we call this function, see how many parameters we have passed? 1 A and B. And finally what I am going to do? I am going to print this A plus B. And at the time of calling this function, we need to pass some argument. This is known as this A and B is known as parameter. You can call it as a parameters, or you can call it as argument. Both, anything you can call parameter or an argument. Okay. Second, so I am printing this one. This is my functionality. This is my function implementation. And finally, when I call this one add, then we need to pass how many parameters is there? A and B. So 2 values. A value is 10 and B value is 20. So what it is going to do? It is going to add this 2 number and we are going to get output as 30. Let me demonstrate with an example. See over here. Now I am going to define some function. Okay. See, def of add. मैंने add करके एक function बनाया. Over here I am passing some parameters. 2 parameters I have passed over here. Okay, and I want to print A plus B. And finally what I am going to do? I am going to call this function. Now it is like 10. See, A value 10 and 20 as B value. See, automatically it gave. A value is 10, B value is 20. And when I call this function, so what output I should get? 30. So I want to display some message as well. That the addition of 2 number is 10 plus 20. Okay, so the addition in the double quotes, whatever you are writing in the double quotes inside the print, the same as it is going to print on the console. See, in the double quotes, what I am writing? The addition of 2 number is colon, and see, inside the double quotes, what I have written? The addition of 2 number is, and finally
comma you have to provide, and you need to add a plus b. Now see, run first step. The addition of two number is 30. The addition of two number is 30. Like this, you can print this statement. So based on these parameters, okay, wait. Okay. So based on the parameters, whatever this parameters, whatever parameters on we are passing, actually function is of two types, predefined and inbuilt function. But based on these parameters, function is divided into four parts. What are that? The first one is known as positional argument. The first one is known as positional argument. Positional argument. Argument. Second is known as, है ना, second one keyword, है ना, keyword argument. Second one is keyword argument. Third one is known as default argument. Third one is default argument. Default argument. Fourth one is known as variable length argument. Fourth one is variable length argument. We call it as varg arg also. We call it as varg arg. If you have any doubt, okay, so you can drop me message on the chat session. You can drop me this message on the chat session. Okay, I'm going to reply for that if you have any doubt regarding this functions concept. Okay, so first one is positional argument, second one is keyword, third one is default, fourth one is variable length argument. We call it as varg arg. Varg arg. We call it as varg arg. है ना? This short form this. है ना? Variable length argument short form is है ना? Varg arg. Now starting from positional argument. है ना? Positional argument. Suppose for example, okay, I'm defining like def of add. Def of add or subtract. Okay, subtract suppose I'm going to write. है ना? Subtract. Subtract. मैंने यहाँ पे subtract करके एक function बनाया जिसके अंदर मैंने दो argument मैंने दिया. And I want to subtract both of them, है ना? Like for example, है ना? I want है ना print of a minus b, print of a minus b. Okay, and after that I need to call this subtract. So for calling this subtract, we need to write subtract and 10 comma 20. So what output I am going to get? है ना? Output 10 minus 20. That means output should be minus 10. Suppose, so what is the value of this a? Position matters. Remember, here position matters in the positional argument. That means the first value, whatever you are passing as first, that is represented to this A, and second is representing to this B. Okay. If you are changing the value, suppose I am providing 20 over here and 10 over here. Okay. So the values change to plus 10. Plus change. So position matters. Position matters over here. Okay. So this is known as positional argument. Let me go through one example. Let me show you one example. Okay. Now I want to define one function like with subtract a comma b, and I need to call this function subtract. I need to call this function subtract. Okay. Now see, here the value of this a is 10 and value of this b is 20. If I am changing the value, so output is also going to be changed. Okay. I am going to provide a minus b. Save this code and right click, run first application. See, minus 10. If I am changing the code, I am providing the value as like 20 and over here 10. Okay. So what output I should get? That is plus 10. See, plus 10. So it is going to matter, and position matters. Okay. So like this is known as positional argument. This is known as positional argument. Next, keyword.
keyword position doesn't matter. Inside the keyword, position doesn't matter. Suppose I want to print name and address. I want to print some name and address over here. Okay. See, suppose I have defined def of show. So I'm going to take two parameters, name comma address, name comma address, name comma address. Okay. And after that, I want to print, see, position doesn't matter. I can print name first or address first, or I can print name after that. So I want to print address first. Okay. So the address is the address is and double quotation one comma address and after that I want to provide some space comma the name is and I'm going to provide some name like this. I can print. So and at the time of now I want to call this function. So show. So first what you need to write, name some like Rohit. Okay, and some address like some Thane. Okay, so what it is going to print? The address is Thane, the name is Rohit. Okay, so position doesn't matter inside the keyword. Inside the keyword argument, the position doesn't matter. After that, next one is default. Inside the default, what is inside the default? Suppose for example, I want to provide some default values. है ना, सी व्हेन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, ध्यान समझना, ये फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं, है ना, सो आई नीड टू गिव सम पैरामीटर्स. अगर मैं पैरामीटर्स नहीं दूंगा तो वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू शो मी एन एरर. है ना, ध्यान समझना. सपोज आई प्रोवाइडेड नेम एंड एड्रेस. I provided name and address. Okay, so I need, it is mandatory to pass these two arguments, name as well as address. You need to, let me show you one example for this. See one example. Suppose I am not passing this value. See, I am not passing this value 10 and 20. I am not passing this value. See, it is going to show me an error. See, it is going to, what error it is going to show? That two arguments are required because it is a two arg. We have provided two parameters over here. So run first. See, क्या रहा है? Subtract. Missing two required positional argument A and B. That means it is mandatory to pass the value of this A and B. If you are not passing the value of this A and B, then definitely you are going to get an error. But in case of default, है ना, suppose for example, I am providing some default value for this A equals 10, and I am providing this default value for B equals 30. Right? I am providing the default value. Now I don't want to pass over here. If I am not passing over here, see what output I am going to get. See, the addition of two number is minus 20. This type of function is known as default argument function. This type of function is default argument function. After that, suppose I want, I have passed some values over here, 100, 100, 30. 100, 30. Now the value of A is 100. Now the value of B is 30. Try to understand, guys. है ना, A का वैल्यू क्या मैंने यहाँ पे दिया? 30. A का वैल्यू है मेरा 100, B का वैल्यू है मेरा 30, एंड ओवर हियर आल्सो आई हैव पास द वैल्यू ऑफ A एज 10 एंड 30. तो प्रायोरिटी किससे जाएगी? है ना, तो प्रायोरिटी हमेशा जो भी चीजें हम लोग एट द टाइम ऑफ कॉलिंग देंगे, प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू दैट. है ना, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? 100. सी व्हाट आउटपुट आई शुड गेट? है ना, 100 A minus B, that means 100 minus 30 is 70. Then output should be 70. See, let me execute the code. The addition of, subtraction of two number is 70. The subtraction of two number is 70, right? है ना, so like this we can use, this is known as default argument. ये मेरा default argument है. This is known as default argument. If you have any doubt, please let me know in the chat session, guys. Now coming on to this, now try to understand. Now next is
है ना, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैर्ग आर्ग, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, दैट इज नोन एज वैर्ग आर्ग, है ना. सपोज फॉर एग्जांपल, लेट मी डिफाइन, है ना, some add function. I want to add, see actually we have calculator. How calculator works, है ना. Suppose I want to add, calculator, I can add 2 numbers, I can add 3 numbers, I can add 10 numbers, I can add 100 numbers, I can add 50 numbers. So for example, let's understand through this scenario, है ना. Suppose I am defining this add, I am defining a method with add, def of add, है ना. Over here if I am passing a comma b, so it is going to add 2 numbers, print of a plus b, ये 2 ही नंबर को ऐड करेगा, ठीक है. अगर मेरे को 3 नंबर ऐड करना है, सो ये मेरा फंक्शन काम करेगा क्या, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, है ना. तो 3 नंबर के लिए मेरे को क्या करना होगा, अगेन आई नीड टू डिफाइन वन मेथड, ऐड वन, है ना. और यहाँ पे मेरे को a कॉमा b कॉमा c, अगेन आई नीड टू पास 3 आर्गुमेंट्स, एंड ओवर हियर आई नीड टू ऐड a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c. अगर मेरे को चार अगर ऐड करना है, फोर numbers I want to add, then what I am going to write, def of add to a comma b comma c comma d, and finally print of a plus b plus c plus d, right. So अगर 5 नंबर ऐड करना है, देखो कितना मेरा कोड लेंदी जा रहा है ना, माई कोड इज गोइंग वेरी लेंदी, ओके. तो इसका एक सॉल्यूशन है, वी हैव वर्ग आर्ग, है ना, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्टार से, है ना. सो वी डोंट नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी वहां पे, है ना. इफ यू वांट टू पास 1 नंबर, इट इज गोइंग टू कॉल, इफ यू पास 2 नंबर्स, इट इज गोइंग टू कॉल, मींस इफ यू पास 50 numbers, it is going to be called, है ना. So that is known as variable, and we call it through the star, है ना. We write star, see over here how to use that. Over here what I am going to do, I am going to provide some star, है ना, star a, star a, star a. Now you can pass any numbers over here, and over here I want to provide some functionality, so I am going to give some functionality over. So let's understand through one example. I'm going to show you one example for this. See this example. So what I am going to do, है ना, try to understand this example. I am going to define, है ना, like def of add, and I am going to pass star a, है ना. And over here I want to give, like I want to print hello, I want to print some hello type of message, okay. Now I want to call this function. For calling this function we need to write add, and some like 10 and a 10. See over here, run first, देखो क्या आ रहा है मेरा, hello I am going to get. Again I want to execute, now I am passing 2 parameters over here, 10 comma 20. See again it is going to print this hello, again hello it came, है ना. I want to print like some 3 times, है ना, 3 values I am going to pass, again it is going to print my value as hello. See hello, again hello, right, है ना. So any type of arguments you can provide, है ना. Like I want to add multiple numbers, I want to add, है ना. So I am going to define one method, है ना, like some def of sum करके एक फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे एस्ट्रिक है, टोटल मैंने लिया 0, दैट मीन्स टोटल स्टार्टिंग में इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी नंबर, देन व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू प्रिंट 0. और उसके बाद मैंने एक लूप चलाया, टोटल प्लस x, जो भी x का वैल्यू हम लोग देंगे, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस टोटल. और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स यहाँ दोगे, 10, 20, 20, 30, 40, 50, जितने भी नंबर्स, it is going to add all those numbers. See, it is going to add, the sum of the number is 150. The sum of the number is 150. See, if you add this one, 90, 100 and 50. Any numbers, any combination you can pass,
That is going to add that number. Any combination we can possibly. And as first step. See, is it required to call again and again? See, from one code, I'm going to execute multiple. है So for calculator, if you are making calculator, you can use this var type of concepts. Yeah. Next. Next. No, we have like set operation. So yeah, we have discussed in the data types the set data type. याद है हम लोग ने फर्स्ट सेशन में डेटा टाइप्स हम लोग ने कवर किया था. डेटा टाइप्स है ना, डेटा टाइप्स हम लोग ने कवर किया था. तो डेटा टाइप्स के अंदर हमने पढ़ा था लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, है ना, लिस्ट, सेट, लिस्ट, टपल, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, है ना, ये हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था, है ना. लाइक फॉर एग्जीक्यूटिंग, है ना, इफ वी वांट टू टेक हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, देन वी शुड गो फॉर दिस डेटा टाइप, है ना. सो अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सेट ऑपरेशन में मेरे को क्या करना है. आई वांट टू फाइंड यूनियन, आई वांट टू फाइंड यूनियन, आई वांट टू फाइंड इंटरसेक्शन, आई वांट टू फाइंड डिफरेंस, राइट. तो हम लोग कैसे करेंगे. तो कोई भी एक सेट बना लो, है ना, डिफाइन लाइक टू सेट, है ना, लाइक S1 इक्वल्स, है ना, एंड फॉर सेट व्हाट वी यूज द कर्ली ब्रैकेट. फॉर लिस्ट व्हाट वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर लिस्ट वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट. फॉर टपल वी यूज सिंपल ब्रैकेट. फॉर सेट वी यूज कर्ली ब्रैकेट, राइट, है ना, like this. So for set I am defining some set, like some like I am taking some name like some Rohit, है ना, Sohit, Mohit. Okay, these are the three entries which I have given inside the S. है ना, S2. Another set is S2. है ना, inside this set I am going to provide Rohit, Rohit. है ना, after that Sohit, Sohit. है ना, Raj, Raj. After that Raju, Raju. है ना. So these are the four entries. These are the four entries. So what is union, what is intersection, and what is difference, है ना. So try to understand union. Union means like, है ना, union. Suppose I am having this set and this one. Intersection means the common entries. This is my common entries. ये मेरा common entries है. So ये मेरा क्या होगा. This is known as intersection. Intersection. This is known as intersection. है ना. यूनियन क्या होगा. यूनियन में all the records you are going to get inside the union. Inside the union, all records you are going to get. Okay. And difference. Difference means if I am writing S2 minus S1, S2 minus S1, that means this is going to means that means S1. S1 will be over here. Rohit, Sohit, Mohit. Mohit is also there. है ना. Rohit, Sohit, Mohit. Mohit is also there. Mohit. Now I want to minus this one. I want to minus. Then this cancelled, and what I am going to get? I am going to get Raj. Clear? And if I am going to provide S2 minus S1. अगर मैंने लिखा S1 minus S2, if I am writing S1 minus S2, then S1 is going to, है ना. Now अब मेरा क्या होगा. S2 minus होगा, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, and what finally I am going to get, है ना, Mohit I am going to get as an output. Clear with this? है ना. Let me execute this code. See over here. Okay. Now see, I'm removing this one. Yeah, this piece of code I'm removing. Right? And now, so I'm going to define S1. S1 equals, right? And now something like what is that? Rohit. Rohit. After that, Sohit. Sohit. Mohit. And now these are the three entries. And inside the S2,
S2 आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दीज टू एंट्रीज, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, है ना, यही दो एंट्री मेरे को चाहिए सर, आई वांट दीज टू एंट्रीज एज कॉमन, है ना, कॉमन एंट्रीज चाहिए, these are the common entries and some Raj and Raju, right, है ना. Now see, now I want to find, है ना, intersection, so I am taking some third variable, है ना, z equals, है ना, क्या लिखना होगा यहाँ पे, s1 dot intersection, see intersection, किसका इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को, S2 का इंटरसेक्शन चाहिए, एंड फाइनली आई वांट टू प्रिंट दिस जेड, फाइनली आई वांट टू प्रिंट दिस जेड. ओके, राइट क्लिक कराना है फर्स्ट एप्लीकेशन. देखो ये इसके अंदर क्या आया मेरा, है ना, जो भी मेरा कॉमन रिकॉर्ड्स है इंटरसेक्शन के अंदर, सी व्हाट आर दी कॉमन रिकॉर्ड्स, देखो यही कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, मोहित, सोहित, रोहित, क्लियर, इंटरसेक्शन के केस में, है ना, व्हाट आर दी कॉमन रिकॉर्ड्स आई एम गोइंग टू गेट, है ना. और अगर यहाँ पे मैं यूनियन कर रहा हूं, देन ऑल द रिकॉर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट, राइट, ऑल दी यूनियन किसके साथ यूनियन करना है, फ्रॉम दिस S2 आई वांट टू, एंड फाइनली आई एम स्टोरिंग इनसाइड दिस जेड. देखो सारे वैल्यूज मेरे पास आ गए, है ना, राजू, मोहित, राज, रोहित, सोहित, all the values inside the union, all the 5 values, है ना, repeated records नहीं मिलेंगे. See over here also Rohit, 2 times Rohit, but you won't be getting the repeated records over here. And finally difference, है ना, तो S1 minus S2, see difference, है ना, difference, है ना, किसके साथ करना है, S2 के साथ difference करना है मेरे को, है ना, and run as first application. See only Mohit I got, that means सिर्फ मोहित मेरा आएगा, because ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया, है ना, and finally मोहित. अगर मैं S2 minus S1 करूंगा, then Raj and Raju I am going to get. If I am doing S2 minus S1, then देखो Raj and Raju. Clear with this? Any doubt, guys? You know, है ना. Now next. है ना, हाँ, अब आते हैं हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग, है ना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल हैंडलिंग, है ना. एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग दो तरह की चीजें होती है, वन इज एक्सेप्शन एंड अदर वन इज एरर, है ना, दो तरह की चीजें होती है. Suppose for example I am writing some piece of code, okay, I am writing some piece of code, let me go through one example, let me show you one example. Okay, now see, है ना, suppose I want to print, है ना, print of hello, है ना, I want to print this hello like some 5 times, I want to print this hello 5 times. Control C, Control V. Okay, now what happened in between, I wrote some like 10 divided by 0, I wrote 10 divided by 0. Now once I execute this code, suppose for example let me write this hello here, है ना, it should be hello. So कितने बार hello मेरा print होगा, 5 times it is going to print. See 5 times hello, 5 times it printed. Now I am providing 10 divided by 0, 10 divided by 0, 10 divided by 0. Now see what will happen, है ना. देखो क्या आया मेरे पास, एक्सेप्शन आया. कितने बार मेरा चला कोड, 2 बार चला मेरा कोड. एंड उसके बाद मेरा क्या आया, है ना, सी ओवर हियर, है ना, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0, एंड माय प्रोग्राम टर्मिनेटेड एबनॉर्मली, है ना, एबनॉर्मल मेरा प्रोग्राम का टर्मिनेशन हुआ. सो इसे ही अवॉइड करने के लिए हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, है ना, वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना. अगर सपोज मेरे पास सम 100 लाइंस ऑफ कोड है ना, सपोज वी आर हैविंग सम 100 लाइंस ऑफ कोड, और बीच में अगर कहीं पे एक्सेप्शन आता है ना, देन ऑल दी, है ना, रिमेनिंग लाइंस ऑफ कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ऑल द रिमेनिंग लाइंस ऑफ कोड वोंट बी एग्जीक्यूटेड. तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सेप्शनल हैंडलिंग, है ना. तो वो मेरा एक्सेप्शनल हैंडलिंग, इसे हम लोग हैंडल करके चलेंगे. जहां पे मेरे को लग रहा है कि मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट करेगा, सो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, है ना, वी आर गोइंग टू हैंडल दैट वन, वी आर गोइंग टू हैंडल. और इसे हैंडल करने के लिए वी आर हैविंग ट्राई विथ एक्सेप्ट ब्लॉक.
क्या है मेरे पास, ट्राई, ट्राई है ना, विथ एक्सेप्ट ब्लॉक, ट्राई विथ एक्सेप्ट ब्लॉक. ओके, ट्राई के अंदर हम लोग जो कोड में मेरे को लग रहा है लाइक, है ना, आई वांट लाइक सम, मेरे को लग रहा है कि इस कोड में मेरे को एक्सेप्शन आ सकता है ना, सो दैट कोड इज नोन एज रिस्की कोड. वो मेरा क्या कहलाता है, रिस्की कोड. दैट कोड इज नोन एज रिस्की कोड, है ना. और उसे हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई के अंदर. और इसका रिजोल्यूशन हम लोग कहां लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द रिजोल्यूशन इनसाइड द, रिजोल्यूशन इनसाइड द एक्सेप्ट ब्लॉक. जो भी लिखना चाहते हो कि डोंट डिवाइड बाय जीरो, है ना, इफ यू वांट टू नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो उसे हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं. सी वन एग्जांपल. सी ओवर हियर, है ना. सो इनसाइड द ट्राई, ट्राई कोलन, इट इज ए ब्लॉक, है ना, इट इज ए ब्लॉक, है ना. सो यू नीड टू राइट इनसाइड दिस ब्लॉक एंटर. सी ट्राई, और ट्राई के साथ एक्सेप्ट इज मैंडेटरी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सी एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट ब्लॉक इज मैंडेटरी फॉर दिस वन, है ना, एक्सेप्ट, है ना. किस तरह का मेरा एक्सेप्शन है, आई एम हैविंग सम अरिथमेटिक एरर, अरिथमेटिक एरर. ओके, एंड आई वांट टू प्रिंट, है ना, आई वांट टू प्रिंट ओवर हियर डोंट डिवाइड बाय जीरो, डोंट डिवाइड बाय जीरो, है ना, जीरो से इसे डिवाइड मत करो, है ना. एंड आफ्टर दैट प्लीज कंटिन्यू माय रिमेनिंग पीस ऑफ कोड, है ना. नाउ सी, लेट मी रन दिस कोड. देखो अब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, देखो ये हेलो हेलो एंड डोंट डिवाइड बाय जीरो, और उसके बाद मेरा फिर से हेलो प्रिंट हुआ. So this is, if this is my requirement, अगर इस तरह का requirement है, then we have to go through the exception handling concept. मैं चाहता हूं, है ना, suppose for example I want to take the input from the user, है ना, I want to take input from the user like some a equals int input, int input, enter the value, enter the value of a, enter the value of a, है ना. And finally b also, b equals int input int input, enter the value, of b, enter the value of b, right. And finally I want to divide, है ना, inside the c I want to divide a divide by b, or like yes, okay, ठीक है, a divide by b, a divide by, okay. And finally I want to print the value of the c, print c, है ना, the division of two number is colon, and I want to print this c value. Now see, I am going to execute this code. Now over here it is going to prompt me, enter the value of this a 10, enter the value of b, and a 2. So exception will not occur. So what finally output I am going to get? I am going to get 5 as an output. और ये क्या करेगा, फिर से except block के अंदर नहीं जाएगा. It is not going to enter inside the except block. देखो except block में अंदर आए क्या, सिर्फ इसने क्या बोला, division of two number is 5.0. Division of two number is 5.0. और उसके बाद hello hello करके इसने प्रिंट किया. If suppose again I am executing the code, see again I am executing the code, है ना. तो enter the value of a 10 and enter the value of b 0. Now see exception, ये देखो ये किस में गया, ये मेरा except block के अंदर गया. And finally it printed don't divide by 0. Okay, अब फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूं कोड, है ना. नाउ फॉर एग्जांपल हियर आई एम राइटिंग a 10, और यहां पे मैंने दे दिया गलती से a दे दिया, मैंने वैल्यू a मैंने वैल्यू दे दिया, है ना. दैट मींस कैरेक्टर मैंने एंटर किया. देखो यहां पर ये हैंडल नहीं हो पाएगा मेरा, है ना. और यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया मेरा, और उसके बाद लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं किए मेरे पास, है ना. और यहाँ पे क्या आया, है ना, इनवैलिड लिटरल फॉर द इंटीजर, है ना, विथ बेस 10 a. मतलब बोला क्या कि आपने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया एंड यू आर प्रोवाइडिंग दी कैरेक्टर, यू आर प्रोवाइडिंग सब स्ट्रिंग लिटरल्स, है ना, स्ट्रिंग लिटरल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इट इज ए वैल्यू एरर. तो इसे भी हैंडल करना होगा. तो मेरे को क्या करना होगा, वी हैव टू टेक अनदर एक्सेप्ट ब्लॉक, एक और एक्सेप्ट ब्लॉक लेना होगा मेरे को, है ना. एक्सेप्ट और इसे क्या लेना होगा, वैल्यू एरर, सी वैल्यू एरर, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, है ना, वैल्यू एरर. और यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट करना होगा, डोंट प्रोवाइड अल्फाबेट्स, है ना, डोंट प्रोवाइड अल्फाबेट्स, डोंट प्रोवाइड अल्फाबेट्स, है ना. अब देखो यहाँ पे, नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड, अगेन 10 एंड वैल्यू आई एम राइटिंग लाइक a अगेन. देखो अब यहाँ पे ये भी हैंडल हो गया.
और क्या किस एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, डोंट प्रोवाइड अल्फाबेट्स, एंड आफ्टर दैट माय कोड गॉट एग्जीक्यूटेड, है ना। तो यहाँ पे कितने एक्सेप्ट ब्लॉक्स लिए, तो एक ट्राई के साथ वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हायरार्की होती है ना। सो मैं क्या करूंगा, है ना, मैं एक यहाँ पे अगर हम लोग कितने एक्सेप्शन ब्लॉक ले सकते हैं, वी कैन टेक मेनी एक्सेप्शन ब्लॉक, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर का क्लास यूज कर लूंगा, है ना, टॉप लेवल क्लास में यूज कर लूंगा, दैट इज एक्सेप्शन क्लास, है ना। ये एक्सेप्शन क्लास क्या करेगा, अरिथमेटिक को भी मेरा ये डिविजन बाय जीरो को भी हैंडल कर लेगा, एंड वैल्यू एरर को भी मेरा हैंडल कर लेगा। एक्सेप्शन दिस इज ए क्लास, ओके। और इसे अब देने की जरूरत नहीं है। अब देखो सब जगह ये मेरा हैंडल करेगा, जितने भी एक्सेप्शन आएंगे ऑल एक्सेप्शन क्लास इज गोइंग टू हैंडल, है ना। सी एंटर द वैल्यू ऑफ ए, है ना, एंटर द वैल्यू ऑफ ए लाइक 10, है ना, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, है ना, मैंने ए दिया, देखो, है ना, डोंट डिवाइड बाय जीरो, डोंट डिवाइड बाय जीरो, एंड इट गॉट हैंडल्ड। अगेन अब मैं जीरो देना चाह रहा हूं, है ना, सी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एंटर द वैल्यू ऑफ ए 10 एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी 0, देखो फिर से आया डोंट डिवाइड बाय जीरो, मतलब दोनों एक्सेप्शन को किसने हैंडल किया, है ना, दिस एक्सेप्शन क्लास गॉट हैंडल्ड। लेकिन मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है, डोंट डिवाइड बाय जीरो, लेकिन जब वैल्यू हम लोग दे रहे हैं तो मेरे को क्या चाहिए वहां पे, है ना, मेरे को मैसेज चाहिए कि डोंट प्रोवाइड स्ट्रिंग लिटरल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है ना, वी आर गोइंग टू प्रिंट सम मैसेज एज मैसेज, है ना, और ये मैसेज को हम लोग ये प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, है ना, लाइक है ना, द एक्सेप्शन इज कोलन, और यहाँ पे कॉमा देखिए हम लोग क्या करेंगे, एमएसजी, है ना। अब जैसा एक्सेप्शन आएगा वैसा मेरे को यहाँ पे मिलेगा 10, यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे क्या है, डिवीजन, योर एक्सेप्शन इज डिवीजन बाय 0। अगेन आई वांट टू प्रोवाइड लाइक, है ना, वैल्यू ऑफ ए 10, ए देखो योर एक्सेप्शन इज invalid literal for integer with base 10. Clear guys? Just tell me any issues in this, किसी को कोई भी डाउट। नेक्स्ट, एरर कैन नॉट बी हैंडल्ड, एरर को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि वर्चुअल मशीन एरर, स्टैक ओवरफ्लो, है ना, एरर कैन नॉट बी हैंडल, एरर को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, एरर कैन नॉट बी हैंडल्ड, कैन नॉट बी हैंडल्ड, कैन नॉट बी हैंडल, इसे हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वर्चुअल मशीन एरर, है ना, वर्चुअल वर्चुअल मशीन एरर, है ना। आफ्टर दैट स्टैक ओवरफ्लो, कभी ना कभी स्टैक ओवरफ्लो होगा, यू कैन नॉट हैंडल दिस वन, है ना। तो दीज आर एन एरर विच यू कैन नॉट हैंडल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, है ना, सी वन एक्सरसाइज इज देयर, है ना, स्टूडेंट एनरोलमेंट मैनेजर, है ना, सी एक्सरसाइज स्टूडेंट एनरोलमेंट मैनेजर, क्रिएट ए पाइथन कोड टू डेमोस्ट्रेट द सेट ऑफ, है ना, डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ सेट एंड परफॉर्म सेट ऑपरेशन, है ना। क्या क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, टू मैनेज स्टूडेंट रोल नंबर इन मल्टीपल कोर्सेज, है ना, जिसमें क्या करना है, स्टूडेंट एनरोलमेंट को मल्टीपल कोर्सेज में अपेयरिंग फॉर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम लाइक सीईटी, जेई, एनईटी। अभी जस्ट हमने किया यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, कैसे हम लोग को फाइंड करना है। तो मेरे को क्या करना है, अलग अलग सेट बनाना होगा जितने भी बच्चे लोग का है ना, उसके अंदर मेरे को एंट्रीज डालनी होगी, एंड सिमिलरली यू कैन यूज लाइक, मेरे को पहला पहला सेट क्या है, S1 स्टूडेंट 1, है ना, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, रोहित, सोहित, है ना, लाइक सम स्टूडेंट 2, यहाँ पे भी कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं, S3, है ना, एंड यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज, है ना, ये वही है।
विजिबल है, राइट, विजिबल, यस गाइस, है ना। सो है ना, तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। अब देखो एक्सेप्शन भी जो मेरे पास है ना, एक्सेप्शन भी दो तरह का होता है ना। वन इज यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड, है ना। ये जो एक्सेप्शन क्लास है ये मेरा प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, मतलब किसने बना के दिया, है ना, पाइथन ने मेरे को बना के दिया है। लेकिन हम लोग खुद का भी एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं। फॉर दैट यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। ओके, क्लियर। रिकर्सिव फंक्शन मैंने बता दिया था लास्ट सेशन में। रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से होता है, जब मैंने फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, है ना, देन दैट इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सी ओवर हियर, है ना। रिकर्सन, रिकर्शन क्या होता है, व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, देन दैट इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, है ना। इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिखाया था, है ना, फैक्टोरियल, टू प्रिंट ए फैक्टोरियल, है ना, टू प्रिंट ए फैक्टोरियल, जहां पे हमने क्या किया था, बार बार फंक्शन को ही फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल कर सके। यू कैन नॉट डिफाइन ए फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन, फंक्शन के अंदर कभी फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते, बट यू कैन कॉल ए फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। क्लियर गाइस, कोई डाउट है तो बताओ, otherwise with this we are going to wind up this session. If anyone is having any doubt, you can drop me in the chat section. Tomorrow also same time we are going to meet 9, है ना, with the remaining topics like file handling, है ना, file handling हो गया, है ना, I will be executing the programs with text file, CSV file, है ना, all these things we are going to. Clear? ठीक है, चलो guys, thank you.